this is Khalid Beg, and welcome to yet another episode of India This Week by Amana and Khalid. As we had warned, as we had requested, as we had made a humble appeal, as we had made an appeal with folded hands, that please don't resort to violence while the burqa hearing is going on in the Karnataka High Court. But it seems sadly mobs which were basically riled up passions by likes of Rana Ayub when she called Hindus terrorists. Yes, this is the lady who claims that apparently Muslims are second-class citizens, but she can have the gall. She can go on for 20 years calling Hindus all sorts of names. And when that happens, and when that is not challenged, her toxicity is not challenged, even though right now we know the kind of financial fraud she is and the amount of money she's looted from people, and yet you have her zombie fans defending her. But most importantly, when she does things like that, you have killings of likes of 26-year-old Hindu activist Harsha. And this time the mob is from fanatic elements from the Muslim community. And now you can see how she's quiet about it, how Arfa Khanum Sherwani is quiet about it. And I hope now people see the agenda behind it. Whenever such killings which don't follow into the narrative of Muslim mobs killing Hindus, they don't talk about it. That is the selectivity we want to talk about, the orphans of secularism. Pehlu Khan deserved justice. He was killed by fanatic elements of Hindu community. Similarly should have been the case of Harsha. But are you seeing even after his death, he's being dehumanized? And you have propagandists like CJ Watermelon is what I call him. He's blocked me on Twitter and he is calling him a terrorist, dehumanizing him. And this is what India is up against. If there has to be harmony between the two communities, you will have to call out these as well. You can't indulge in propaganda. You can't dehumanize this man. You can't dehumanize this citizen. There are people even laughing over the fact that when his sister says, I've lost my brother. For a very long time. It is not for the first time. So why suddenly has this group of young Hindu vigilantes, Hindu terrorists for that matter, who are hosting saffron flag in an educational complex in Karnataka? We are now joined by Rashmi Sawant. Rashmi Sawant is a noted Hindu rights activist, and she also has the unique distinction of being the first Indian to be the student union's president at the Oxford University. Rashmi knows this case, and there is also a lot of sense of familiarity when it comes to Harsha's killing, because she comes from that region, and she's also amongst the first who broke this tragic news of his death. Rashmi, over to you. Tell us your first reactions when the news came in. How did you know Harsha, and how close to home is this? Hi, Khalid, and thank you so much for having me on your show. This is actually very close home because I'm from Udupi. I was born and raised there. I went to school there. I did my 11th and 12th there. I even did my undergrad degree there. I did my mechanical engineering from Manipal. So all of my life has been around sort of Udupi, coastal Karnataka, which is very close to Shimoga. And we're also the same age. So he could be anybody from my brother to somebody in my friend circle. This is very close home. This could be anybody that I've known, anybody in my circles. So it just feels very real at this point. That's someone, you've always got this psychology, right? That it can't be you. Like when bad things happen around the world, or when tragedies happen, of course you feel bad, but then it feels like it doesn't feel close home enough, as in it feels like it could perhaps never happen to you until it does. And these are one of those moments I feel for me personally. Apart from that, with respect to Harsha, he's had a fatwa on him since 2015. So for a better part of his activism, he's been on the watch list. There's a page called Mangalore Muslims, which has been spewing rabid, fatwas against people. And Harsha, he's been active for almost 8 years in the Hindu space, and he had his first fatwa when he was probably a teenager, as young as 18 or 17. And you can imagine how horrific that must be. But he still chose to continue with the activism rather than be bogged down by these extremist elements. And this page was active, it's unbelievable. This page was active until after Harsha was killed. And they were lauding his killing, and they were taking credit for the fact that he's dead by sort of re-referencing their 2015 post saying, oh, we were the first ones to put out a fatwa. So these are the kind of rabid, extremist elements which are festering there in coastal Karnataka. It's relatively a very peaceful and beautiful place. It's the birthplace of a lot of
Hindu philosophical ideals, the Dvaita philosophy, and all of that. The home of Madhvacharya and the Ashtamatas, the Krishna Mata. It's a beautiful place. You've got warm beaches, beautiful mountains, but it's also been, in a sense, a ground for extremist elements to fester. We've had the Bhatkal brothers in Bhatkala, which is also pretty close home, and then we've also had the hijab protests in Udupi, which is again real and at home, and then now Harsha. So it just feels very real. And the Mangalore Muslims page, it's just very indiscriminate, and it just goes after people left, right, straight. One of the recent fatwas that they've put out just before the page was finally taken down a day or two ago was against one of the judges who's involved in the Karnataka hijab protest case in the Karnataka High Court. So that is also very scary because I have personally filed an intervention from the Hindu side, and putting forward our perspective, because I feel every issue deserves a sort of logical end, and then we also have a bunch of logical arguments that deserve to be heard and represented. So I've filed a petition, and pages like these which threaten freedom of speech, expression, and that dialogue that can make our society better is very concerning, because the next thing and they're coming after me for putting out that petition, because we are trying to build a case on the other side as well. So it is quite concerning. I'm also concerned for other activists on the ground who are similar to Harsha, the same age group, who are very passionate about what they do. Harsha has been involved with a lot of good things, like banning of illegal cow slaughter and a lot of other things which really matter to the Hindu community. And there are others like him, and it's just very concerning about all of their futures and what extremist elements can actually do to them. I mean, he's had his whole life in front of him. It feels it feels very real, because I'm at a stage in life where he was, with the whole life sort of in front of you. You've just graduated from university, you're just sort of going out there, you're very young, you've got parents to take care of, you've got siblings, you've got this full life of possibilities, a big future ahead of you, all of these plans, and then it just ends. And then it's just too real when it happens to young people, especially so close home. And I think this is a very it's a collective, it's a day of failure as a community for us this day. And I hope it doesn't happen again, and that we take enough steps and measures to ensure the safety of people who are just voicing their opinions out there. So yeah, thanks a lot for putting your view. Now let's get in also my co-host Amana and other panelist Surya, and let's continue the conversation about the selectivity of how Harsha is demonized and Pehlu Khan is it's everywhere in the news, but it should have been similar for both of them, because ultimately killed by radical elements of other community. That should how it should have been. So let's now join our other panelists. Now I want to continue. Amna, starting with you. Now this case of Harsha's killing, हमने एक पैटर्न देखा है जब इंडिया में there is a Muslim victim at the hands of a Hindu mob like a Pehlu Khan or an Akhlaq, and rightly there is an outrage, and there is an assurance from the Hindu community saying that no, we take accountability, this should not happen. And you have all the political parties, quote unquote secular political parties, go there and say we protest this. But then the reverse, when the victim, as you see in this case, is Harsha. Before this, the case of Kishan Bolia, who was killed for a Facebook post. Before that, there is also a case of Hiralal, who was a Dalit man in Delhi, was killed by the Muslim who had, first raped his sister, then he came out of prison, then killed him. Now, when you see these cases, and then you see the case of Lavanya, who was killed, a young child, for forceful conversion. In this case, the same cabal, which may be symbolized by the likes of Rana Ayub and Arfa Khanum Sherwani, they use those deaths of Muslim victims at the hands of non-Muslims as to shame the entire Hindu community and shame the entire country. In this case, they maintain silence, and so do the secular parties. Doesn't this basically foster then the reactionary communalism which comes from Hindus? Because this does not happen. I mean, in the last 1 month, these 4 killings have happened.
right? And of poor people, right? Of Indian citizens. And obviously there have been communal killings, right? And when the reverse happens, not only does Rana start calling the entire second largest community of India as second class citizens, she starts drawing up, this paranoia, and then says everyone's unsafe. And here they keep quiet. And that is amplified by the likes of Washington Post, New York Times. There is a global ecosystem against India and against Hindus in particular, because there is no sense of balance that is given. Do you agree on that? And what are your views on that, Amna? I think there is not only the, about the key, there is entire global power system जो कि ऐसा करता है. I think इसमें एक ट्रेंड भी है, एक इंडिया का साइके बन चुका है जहाँ पर कि पर्टिकुलर तरह की एक डिवाइड होगा और सर्टेन आइडेंटिटी हमेशा विक्टिम होंगे और सर्टेन आइडेंटिटी हमेशा ऑपरेसर होंगे. तो ये एक जो बन चुका है, ये बहुत ही अंदर, मतलब लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है ये पैटर्न. तो वो 70 सालों से जो बना हुआ है उसी के ऊपर इस गेम को प्ले करना, जो ग्लोबल पावर में अपना जियो पॉलिटिक्स में गेम खेलते हैं उनके लिए ईजी होता है. तो यहाँ पे जो ये आपने बात बोली ना कि जब विक्टिम होता है, अगर कोई हेट क्राइम का विक्टिम होगा जो कि हिंदू होगा, तो वहाँ पे एक बहुत ही अच्छे से साइलेंस धारण कर लिया जाता है. या तो साइलेंस कर लिया जाता है या फिर किसी तरह का एक्सक्यूज ढूंढा जाता है कि पहले उधर से हुआ था और ये तो रिएक्शन है और कुछ नहीं है. ये पैटर्न आपको बहुत पहले से दिखेगा. मतलब जब गुजरात दंगों की भी रिपोर्टिंग हो रही थी, उस टाइम भी हमें नहीं पता कि गोधरा कांड हुआ था उतने अच्छे से, जो अब हमें सोशल मीडिया के थ्रू अब हमारे दिमाग ने रजिस्टर करना स्टार्ट किया है. उस टाइम वो बिल्कुल नहीं आइडिया था कि गोधरा कांड भी पहले हुआ था और छोटे बच्चे जो थे वो मारे गए थे. तो वो जो सेलेक्टिविटी है ये बहुत पुरानी है, कि कोई नई नहीं है. और उस पैटर्न को कंटिन्यू करना बहुत ईजी है इन लोगों के लिए, क्योंकि हम आदी हो चुके हैं. हम आदी हो चुके हैं कि एक तरफ की रिपोर्टिंग होगी. इनफैक्ट यहाँ तक होता है ट्विस्ट करके कि जहां पर अगर मुस्लिम विक्टिम नहीं भी है किसी हेट क्राइम का, तो उसको बना दिया जाता है कोई भी एंगल लाके, अगर आइडेंटिटी इज सच. तो ये पैटर्न हमारे दिमाग में बैठ चुका है. दूसरा, इसके ऊपर जो है पावर्स गेम जैसा भी चलता है उस हिसाब से चलाया जाता है. स्पेशली 2014 के बाद जो सर्टेन चीजें हुई हैं, जैसे कि देखो एनजीओज की जो पावर है, जो पहले एनजीओ को बहुत ही फ्री हैंड मिला था, वो फ्री हैंड अब नहीं मिला है. बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन लेकर के आए हैं. स्पेशली जो एनजीओ के अंदर फॉरेन फंडिंग होती थी उस पर गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है. एफसीआरए का रूल लेकर के आई हुई है. तो इन सब चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा इस जो कबाल है या जो इस तरह का इकोसिस्टम है उसके अंदर कहीं ना कहीं गुस्सा आना था कि फंडिंग के ऊपर भी गवर्नमेंट ने इतना एक तरह का वो लगा दिया है, ईडी इस पे अब पूरा कार्रवाई कर सकता है. इवन एफसीआरए के रूल के अंदर तो अगर आपको फॉरेन फंडिंग 1 लाख तक मिलती है तो पहले आपको एमएचए को बताना पड़ता है, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हो उसका. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें उतना समझ में नहीं आती कि पीछे चल रहा है. बट इन सब चीजों को कलेक्टिवली जब आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 2014 के बाद और ज्यादा क्यों इतना इंडिया के ऊपर ब्लेम लग रहा है कि माइनॉरिटी को टारगेट किया जा रहा है. इन द सेम वे में आप देखो, जब दिल्ली का राइट्स हुआ था तो ये राइट्स हुए थे, ठीक है, दोनों तरफ से लोग मरे थे. यहाँ तक कि जो कल्प्रिट्स है जिन्हें लेके जाया गया वो भी हिंदू भी है मुस्लिम भी है, दोनों लोगों के ऊपर केसेस हुआ है. लेकिन पूरा बनाया गया मुस्लिम जेनोसाइड, वन साइडेड. जबकि आपको पता है कि शाहरुख, आई थिंक शाहरुख नाम था उसका, शाहरुख खान, जो कि जिसने बंदूक या शाहरुख पठान, हाँ, बहुत सारे केसेस. हमारे एक टॉप आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा को भी 100 बार स्टैप करके मार दिया था. दिलबर नेगी को बर्न कर दिया था. ऐसे तो कई सारे, और हमारे इतने जाबाज ये भी थे, पुलिस वाले भी थे. एग्जैक्टली. तो ये जो है जो ग्लोबल मीडिया है वो भी इसमें साथ देती है. आई थिंक इसमें भी हमें बहुत वन साइडेड नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हम जिसको देख रहे हैं, स्पेशली वॉशिंगटन पोस्ट है, वॉशिंगटन पोस्ट के जो इन्वेस्टर हैं वो आप देखो ज्यादातर टर्की वाले हैं. आई थिंक 50% उनका इन्वेस्टमेंट है. तो वहां पे एक जियो पॉलिटिक्स भी होता है, क्योंकि टर्किश को मिडिल ईस्ट के अंदर एक गेम प्ले करना है. एंड दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद द वे सऊदी एंड दुबई इज राइट नाउ गोइंग विद द इजराइल. ऑल्सो
ऑल्सो मिडिल ईस्ट का इंडिया के साथ काफ़ी अच्छा अभी बन रहा है सिस्टम, बनना भी हमने मल्टी बिलियनियर उनके साथ पैक्ट किया हुआ है। तो इन सब एग्जैक्टली तो इसमें जो इंटरनेशनल भी हम बैकअप देखते हैं, हमें उसके भी पीछे जाके देखना पड़ेगा कि कौन कौन से प्लेयर अपना गेम प्ले कर रहे हैं। तो हाँ, एक सिस्टम बना हुआ है और इस सिस्टम में एक चीज़ है जो हिंदू फोबिया है, जो कि एक ट्रेट है कहीं ना कहीं अब्राहमिक सोसाइटी का। उस चीज़ को हम कभी एड्रेस नहीं कर पाते हैं और इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से। अगर अब नहीं कर पाएंगे तो हम कभी कर नहीं पाएंगे इस बारे में बात। सूर्या, आप भी इसको ऐसे ही देखते हैं कि किशन के केस में जब उसकी डेथ होती है गुजरात में, ओवर व्हाट द रैडिकल्स विद इन मुस्लिम कम्युनिटी फील कि उसने ब्लास्फेमी की, फिर उसको मार दिया जाता है एज अ 20-day ओल्ड बेबी। लवन्या के केस में फोर्सफुल कन्वर्जन होता है तमिलनाडु में, शी इज ऑन कैमरा सेइंग इट, अगेन इशू को दबाया जाता है। सिमिलरली इन केस ऑफ हर्षा, बीजेपी की ही गवर्नमेंट है कर्नाटका में एंड दे आर डाउन प्लेइंग इट, और रश्मि कैन टेल अस मोर अबाउट दैट। एंड हीरालाल के केस में तो ये एक सेम चीज क्यों नहीं देते? अगर पहलू खान डेफिनेटली ऑन कैमरा मारे गए थे, हिंदू फैनाटिक्स से, मुस्लिम थे, लेकिन सेम चीज तो वहां भी होनी चाहिए ना, तभी तो एक सोसाइटी में एक हार्मनी आएगी। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, एक चीज है कि इफ वी एक्सपेक्ट राना अयूब एंड आरफा खानम शेरवानी टू बी फेयर about their narratives and address the killings of Hindus as a result of hate crime also, then the joke is upon us actually, that we are still expecting them to say something fair and something justified, that we have still not realized that these people are inherently selfish, and not just selfish to not as a selfish towards their community. It's not like that they mean well for all the Muslims. They are just selfish for themselves. Because ये जो hate culture चला रही है ना, मतलब एक देखो, अगर आप right wing hate बोलोगे तो वो तो दिखता है, लेकिन hate with the pretense of virtue, with the pretense of secularism, with the pretense of democracy, ये जो कारोबार चला रहे हैं ना, एक छोटी सी एक जो इंटरेस्ट ग्रुप, उसमें हिंदू भी है और उसमें मुस्लिम भी है, ठीक है। लेकिन ये बात हमें समझना पड़ेगा कि मुस्लिम, इसमें जो मुस्लिम हाफ है उसके अंदर जो ट्राइबलिस्टिक फीलिंग है वो पीएचडी प्रोफेसर से लेके साइकिल पंक्चर वाले तक एकदम इनग्रेन्ड है। हमारी प्रॉब्लम होती है कि हम बहुत इजीली हिंदू सोसाइटी की जो फैनेटिसिज्म है उसे हम इजीली एड्रेस, बार बार एक फेटिश के साथ लोग एड्रेस करते हैं। इसका एक रीजन है कि हिंदू सोसाइटी की जो फैनेटिसिज्म है वो अभी भी मेनली नोडलाइज्ड है, वो एक नोट से आता है। इंडिपेंडेंस मूवमेंट के समय 1920s के समय जो ऑर्गेनाइजेशंस आई थी बस वही से आ रहा है, वही से तो आपको टारगेट करना भी इजी हो जाता है, तो इट्स इजीली डूएबल। लेकिन मुस्लिम सोसाइटी की जो फैनेटिसिज्म आ रही है वो नोडलाइज नहीं है, वो ग्रैन्युलर है, वो 100 कोने से आती है, ठीक है। तो उसे आप टारगेट कैसे करोगे? उसे टारगेट करने के लिए कहीं ना कहीं फिर आपको वहीं से जाना पड़ेगा कि इसकी असली जो मोटिवेशन, असली जो इंस्पिरेशन वो कहाँ से आ रही है, वो भी एकदम डिस्पर्स्ड है। एक डेडलॉक आ जाता है कि अगर आप टारगेट करने जाओगे, ये आप टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप टारगेट करने जाओगे तो आपको बोला जाएगा कि यू आर अ बिगट। तो ये कहीं ना कहीं कम्युनिटी के अंदर से ही होनी चाहिए ना, बिकॉज दे हैव द स्किन इन द गेम, और वो नहीं हो पा रहा है। और मैंने देखा है कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर से जब इस चीज को टारगेट करने की कोशिश करते हैं तो फैनेटिक मुस्लिम और सेक्युलर हिंदू मिलके किस तरह से सैबोटाज करके उनको दबा देते हैं। जिस दिन मैंने ये देख लिया ना खालिद, उस दिन इंडियन सेक्युलरिज्म से मेरा पूरा रिस्पेक्ट चला गया। आई एब्सोल्युटली डिसलाइक दिस वर्ड, I absolutely disown this word, and I absolutely kind of don't associate with myself. हाँ, सेक्युलरिज्म एज ए कॉन्सेप्ट, एज ए प्योर कॉन्सेप्ट जो वेस्टर्न मॉडल में है, उसकी एक रिस्पेक्ट है मेरे लिए। सोसाइटी में हम बहुत ये इस बात को सोचते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, मोरल क्या है, इमोरल क्या है, लेकिन हम एक बेसिक चीज नहीं समझते हैं कि डेफिनिट क्या है और एम्बिग्यूअस क्या है। मतलब जिस सोसाइटी में जो लीडर्स है ना, वो अपने हाथ में जो सारा कंट्रोल रखना चाहते हैं ना, तो वो रिलीजन का सहारा लेते हैं, क्योंकि रिलीजन में बहुत एम्बिग्यूटी है, और क्योंकि रिलीजन में बहुत एम्बिग्यूटी है इसलिए दे हैव द फाइनल डिसीजन इन देयर हैंड कि वो किस तरह से रिलीजन को तोड़ मरोड़ के अपने फायदे के लिए काम कर सकते हैं। जबकि एक ऑर्डर बेस्ड अगर आप सोसाइटी बनाओगे तो थिंग्स बिकम वेरी डेफिनिट, थिंग्स डिपेंड ऑन लॉज एंड रूल्स, तब लोगों के हाथ में वो डिक्टेटरशिप वाली पावर नहीं आती है। तो इस हिसाब से सेक्युलरिज्म के लिए मेरे दिल में इज्जत है। लेकिन जो इंडिया में जो कचरा चलता है ना, दैट इज काइंड ऑफ कंप्लीट बुलशिट एंड आई डोंट हैव नो रिस्पेक्ट फॉर इट।
क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, ये ट्रू इस्लाम है और ये वाला इस्लाम इन एक्शन है, ये ट्रू हिंदुइज्म है और हिंदुइज्म वाला एक्शन जो कि कास्ट रिडन है, तो वो ट्रू सेक्युलरिज्म कुछ और होगा। लेकिन हिंदुस्तान का जो सेक्युलरिज्म है, दैट्स एब्सोल्यूट गार्बेज, एंड वी हैव, आई डू थिंक दैट वी नीड टू फाइंड some substitute for it or some restructuring for it. It's fundamentally flawed. I think India is not a secular country. I think it's a ultra religious country, because each religion has its, I mean, many religions have their own personal laws in the constitution. It's provided for by in the constitution. There are, there are provisions there. हम सब ultra religious बन गए हैं. I don't think this country is secular. If it was secular, we would have all integrated into one society. That is basically the concept, right? Like, if there are different people living in a certain ecosystem, we all need to integrate and look like one, behave like one, come up with uniformity. And the very protest, the hijab protest, is a threat to secularism, because it is asking for difference. So it's asking for ultra religiousness, and that is what this country has been practicing for a really long time, the ultra religiousness of minorities. And it's been going on and on and on and on. The day our country becomes truly secular, that will be the day when the minority will come out and say कि हमें secularism नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो हमारी मनमानी नहीं चलेगी. So I think the definition of secularism is not at all implemented. What is being implemented is ultra religiousness in the name of secularism. उसको secular कहा जा रहा है, but जो implement हो रहा है ना, that is ultra religiousness. So true secularism was never implemented in India. Had it been implemented, then this day wouldn't have come. We wouldn't have been mourning over the deaths of Harsha or Lavanya or anybody. I think like हमारे जो original जो हमारे constitution के जो निर्माता है, they avoided this word secularism to add it in the preamble. ठीक है, maybe they knew the reality of this country better and they had this मतलब उनकी शायद conception बहुत clear थी कि इसको आने से challenges क्या होगा. लेकिन बात ये है कि secularism ये word तो इमरजेंसी के समय जबरदस्ती कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है, और क्या हुआ है एज ए नेट रिजल्ट हम देख रहे हैं कि सेक्युलरिज्म की जगह वी आर ओनली सीइंग अ कल्चर ऑफ हिपोक्रेसी, ब्लेटेंट शेमलेस हिपोक्रेसी. और क्या, और लोग कब तक टॉलरेट करेंगे इसे? Right. So my last question, if I could get a quick 1 or 2 minutes, we're running out of time, that how will this issue get solved? What are the initial steps that we need to take where people like Lavanya, Kishan, Hiralal, Harsha are not orphans of secularism? And in particular, I want to understand, what is the secular Hindu who does not talk about them and allies with the radicals within Muslims and says we don't need to talk about them? Amna, a quick 1 minute on that. कि ये कैसा एक relation है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता सेलेक्टिविटी का कहलाता है. आई थिंक ये जो है, हमें सबसे पहले सच बोलना पड़ेगा. बिना सच के कोई रिकन्सिलिएशन नहीं हो सकता. तो यहाँ पे बात ये नहीं हो रही कि किसी एक कम्युनिटी को ज़्यादा ब्लेम करना है या कम करना है. यहाँ बात हो रही है कि अगर हमें सच में रूट कॉज में जाकर के रीज़न पता करने हैं और कहाँ से सोल्यूशन आ सकता है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले सच बोलना होगा. आई थिंक इतना ही काफ़ी है मेरे लिए बोलना. Okay, Surya up and then Rashmi can have the last word. नहीं, देखिए बात यह है ना कि एक तो क्या है कि आइडियली क्या होना चाहिए, और एक है कि व्हाट इज पॉसिबल. इस कंट्री में जब कोई भी एक माइनॉरिटी ग्रुप है, वो किसी भी तरह का हो, या रिलीजियस माइनॉरिटी हो, या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो, या रेशियल माइनॉरिटी हो, वो अपनी एक पॉलिटिक्स ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट करेगा. इसे बहुत जस्टिफाइड माना गया है क्योंकि वो भी अपनी समान हक के लिए लड़ रहा है. लेकिन जिस चीज को कभी भी मोरली और एथिकली एक्सेप्टेबल नहीं समझा गया है कि मेजॉरिटी भी अपनी सेल्फ इंटरेस्ट की पॉलिटिक्स कर सकती है. तो अभी ये पारा इतना बढ़ चुका है कि अभी मेजॉरिटी भी इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर रही है कि you don't need to be the mother cow of all dissident groups, कि आपको दोहन करते रहेंगे, जब तक आप दूध देते रहेंगे तब तक आपका दूध पिएंगे, और फिर दूध देना बंद करोगे तो आपको मार के आपका बीफ काट देंगे. वो मदर काउ होने की कोई जरूरत नहीं है. नाउ यू ऑल्सो हैव टू डू the politics of your self interest within the framework of the given constitution. और ये जो mindset है, ये इस country के majority को अब अपनाना होगा. Stop being that elderly figure, stop being that father figure that nobody respects. अपने दिल से respect नहीं करता. They just respect for the convenience, the benefits that they are extracting from you. So इसका कोई point नहीं बनता. मैं बस यही कहना है. All right.
Rashmi, how about you? How do you see that situation can get better and there can be no selectivity, but there can be an equality, like the outrage over a Pehlu should be similar to the outrage over Harsha. So I think we need to fix our judicial system. We need to reduce timelines, increase, sort of implementation of everything. That's where things will get, they will solve. Because right now we rely on social media trials to kind of get to, means to an end. And that's never going to solve the problem, because it is always going to be laden with hypocrisy. कोई ना कोई अपनी convenience के हिसाब से propaganda बनाता ही जाएगा. And we are just people of free world, so it's just going to continue more and more. We are going to have more Rana Ayubs out there. All we can do is solve this through a better law and enforcement system, through a better sort of judicial system, and foolproof systems wherein the evidence is collected properly. There are forensic tests which all happen in a very well bounded timeline, and there needs to be very little interference of state in these matters, like how the Tamil Nadu government is so in this entire investigation into the Lavanya case. That should stop, because political parties can play dirty, and the judiciary has to be truly and fully independent in that sense, with many provisions for review for bad behavior in case they do decide to weaponize that as well. I think that is what's needed. And social media is just going to spiral out this way, and all I hope is that there are more people who speak out the truth one day. That's not going to simply solve the problem. Right. Surya, you want to have one more? Yeah, you can. No, मैं एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि सपोज अगर से तबरेज की लिंचिंग हो जाती है या पेलू खान की लिंचिंग हो जाती है, और स्टेट अगर उन केसेस से डील करने में ढिलाई बरतती है या किसी भी तरह से क्रिमिनल्स को या एक्यूज को शील्ड करती है, तब आउटरीच करने का तो एक लेजिटिमेट रीजन बनता है. लेकिन सपोज फारूक जो एक एथीस्ट मुस्लिम था, उसे मार दिया गया ना बिकॉज ऑफ उसके एथीज्म के लिए. उसके लिए ना राना अयूब कुछ बोली, ना अरफा खानम शेर खानी बोली. हाँ, उसके जो कल्प्रिट था उसे सजा दी गई है, लेकिन सजा देने तक इज नॉट इनफ. यू हैव टू डाइसेक्ट द आइडियोलॉजी, द माइंडसेट एंड द एनवायरनमेंट जहां से उसको इतनी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिल रही है, उसको लेकर भी बात करनी होगी. वो नहीं हो रही है. तो सजा देना लीगली जुडिशियली जितनी इंपॉर्टेंट है, ये बातें करना भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बातें विलफुली अवॉइड की जाती है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि वो भी एक लेजिटिमेट कंसर्न है कि अगर हम इतनी नेगेटिव बातें बोलेंगे मुस्लिम तो क्योंकि वो एक माइनॉरिटी है, और जो कम्युनिटी माइनॉरिटी होती है ना, उसे सेग्रीगेट करना बहुत आसान होता है, तो दे बिकम टारगेट. लेकिन वो वाली मैच्योरिटी मुस्लिम से भी आनी चाहिए कि प्रॉब्लम को आप होलिस्टिकली देखें. आप सिम्टम ब्लेमिंग मत कीजिए कि ये रिएक्ट कर रहा है, ये नफरत की राजनीति है. आप इसके बैकग्राउंड और हिस्ट्री को देखिए ना. सेक्युलर हिंदू, जो सेक्युलरवादी हिंदू है, जिनके पास आज तक इंस्टीट्यूशनल और एकेडमिक पावर थी, उन्होंने कुछ बहुत ही एक लॉलीपॉप वाला नैरेटिव मुसलमानों को थमा दिया है कि ये सवाल उठे तो ये बोल देना, ये सवाल उठे तो ये बोल देना, और इसके बियॉन्ड वो देख ही नहीं रहे हैं. जो काम आमना कर रही है, जो तुम खालिद कर रहे हो, या फिर जो के व्यूज भी बहुत मतलब ऑब्जेक्टिव है, वैसा एक कोलैबोरेटिव सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि इन लोगों का अपना एक क्लास बन चुका है जो हमारी मिजरी से प्रॉफिट करेंगे और हमको लड़ाएंगे. इट्स ऑल्सो नॉट इजी कि वो हमको लड़ा रहे हैं इसलिए हम लड़ रहे हैं. बात ये हम में अपने भी प्रॉब्लम है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, बहुत कुछ है, लेकिन वो रिजोल्यूशन की तरफ जाएगा तो ये लोग उसे रोक रहे हैं. मुझे पता नहीं इसका क्या होगा. लाइक एक चीज है कि आइडियल सोल्यूशन और एक चीज है पॉसिबल सोल्यूशन, और पॉसिबल सोल्यूशन कैन ओनली हैपन विद आपके पास मींस क्या है, आपके पास पॉलिटिकल चॉइसेस क्या है. वो अब जैसे आज चीजें आगे बढ़ेगी वैसे ही होगा. मैं बहुत ज्यादा उस पर फोकस नहीं करता कि आइडियली हमें क्या करना चाहिए. All right. Okay. Thanks a lot, Surya. Thanks a lot, Rashmi, for joining us on this show. And we hope with an endeavor that, again, Kishan, Lavanya, and, Hiralal and Harsha don't remain orphans of Indian secularism. And they too get their justice, and there is an outrage, there are protests, and they too, are not the lesser children of God when it comes to getting justice. All right. Thank you. Thank you, everyone.